Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning GK of Class 8. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Knowledge Navigator, Your GK Journey. Let's start chapter number 21, which is Sporty Women. So women's sport include both amateur and professional competitions in virtually all fields. Women's sport में दोनों ही चीज़ें आती हैं, amateur और professional competitions आते हैं सारे fields में. So female participation in sports rose dramatically. So जो female participation in sports में वो बढ़ता जा रहा है in the 28th century में, especially in the last quarter of the century. और जो last quarter था century का उसमें तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है. So let's take a look at some of the famous women in the field of sports. तो चलिए कुछ ऐसे ही women के बारे में पढ़ते हैं जो कि स्पोर्ट्स के फील्ड में उन्होंने नाम आगे बनाया है. So the first one is the Australian Open Tennis in 2015 was won by. So the first one is the Australian Open Tennis in 2015 was won by. जो Australian Open Tennis था 2015 में वो किसने जीता था? सेरेना विलियम्स, मारिया शारापोवा और वीनस विलियम्स. The correct answer is Serena Williams. Next, second, who was the first African American woman to win a major sports title at the American Tennis Association ATA National Tournament in 1917? कौन थी वो पहली अमेरिकन अफ्रीकन वुमेन जिन्होंने मेजर स्पोर्ट टाइटल जीता था अमेरिकन टेनिस एसोसिएशन में 1917 में? And the options are Shirley Fryvin, Eleonora Sayres or Lucy Dix Sloan. So the correct answer is Lucy Dix Sloan. Next, third, which American woman in 1926 became the first woman to swim the English Channel? कौन थी वो अमेरिकन वुमेन जिसने जो है स्विम किया था इंग्लिश चैनल को 1926 में? एथिल लैकी, जेट्रूड एडरिल और लूसी मॉर्टन. करेक्ट आंसर इज जेट्रूड एडरिल. नेक्स्ट, फोर्थ, which female pitcher in 1931 became the first woman in professional baseball to strike out Babe Ruth and Lou Gehrig in an exhibition game? कौन थी वो फीमेल लेडी जिसने 1931 में जो कि पहली वुमेन बनी थी जो कि एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर थी जिन्होंने बेब रूथ और लो गेहरिग को स्ट्राइक आउट किया था? एंड द ऑप्शंस आर जैकी मिचेल, लूसी डांजिगर, के शाबोनो. एंड द करेक्ट आंसर इज Jackie Mitchell. Next, fifth one, which athlete in 1932 won the AAU National Track and Field Meet? कौन से एथलीट है जिसने 1932 में जीता था AAU नेशनल ट्रैक और फील्ड मीट को? लिज सक्स, जीन हेथरिंगटन और बेब डिड्रिक्सन. एंड the correct answer is Babe Didrikson. Next, sixth, which Olympian in 1948 was the first African American woman to win an Olympic gold medal? कौन थी वो ओलंपियन जिसने 1948 में पहली वो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन बनी थी गोल्ड मेडल जीतने वाली? जीन शेले, एलिस कोचमैन और Esther Brad. Correct answer is Alice Coachman. Now let's move on to the seventh one. Who in 1953 became the first woman to win a Grand Slam? कौन थी वो लेडी जो कि पहली वुमेन बनी थी ग्रैंड स्लैम जीतने वाली 1953 में? All four major tennis championships in a calendar year. और इन्होंने 4 मेजर टेनिस चैंपियनशिप जीते थे कैलेंडर ईयर में. डोरिस हार्ट, शेरली फ्राइविन, Maureen Connolly. And the correct answer is Maureen Connolly.
Next 8. At the 1960 Rome Olympics, 1960 के Rome Olympics में who was the first American woman to win 3 Olympic in track and field at a single Olympic Games? And the options are Martha Hudson, Wilma Rudolph, Barbara Jonas. And the correct answer is Wilma Rudolph. Next, 9th one, who scored the winning goal in the 1999 World Cup for the US national soccer team? And the options are Brady Chastain, Lily, Mia Hamm. And the correct answer is Brady Chastain. Next, 10th, which of the following boxers does not have a professional boxer as her father? So कौन थे वो प्रोफेशनल बॉक्सर जिनके फादर एक प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं थे? लैला अली, लूसिया रिचको, जे मैरी मूरे. And the correct answer is Lucia Ridgker. So these are the answers that you have to mark, and this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.